Hi friends, आज हम डिस्कशन करिवा आरबीआई असिस्टेंट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेहेतु कम समय अच्छी आ भितर हमको एग्जाम रो लेवल क्वेश्चन को नहीं किना हमें सॉल्व करिवा तेणु सबु चैप्टर केमती कवर हो परिवो बा मेन लेवल रे एग्जाम रो क्वेश्चन केमती आसीबो आज देखिए हमें इम्पोर्टेंट चैप्टर देखी डिस्कशन करिया ठीक है इम्पोर्टेंट चैप्टर देखि डिस्कशन करिवा जेमिति गोटे आपनकर धर मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर आज डिस्कशन करिया हम भाबुची काहे कि मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर को हम नहीं डिस्कशन करिया बिकॉज़ जे मिक्सचर एलिगेशन गोटे इंडिया चैप्टर अन्य चैप्टर रो क्वेश्चन को मध्ये मिक्सचर एलिगेशन यूज करिकना हमें सॉल्व करथा आ मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन मध्ये आसीता ओके एवं ता सीधा में छोट छोट चैप्टर रखिया पार्टनरशिप average, then ratio proportion, okay, then on edge. एवं हमें किसी क्वेश्चन डिस्कशन करिया मिक्सचर एलिगेशन रो ये जो मिक्सचर एलिगेशन मेन लेवल रो क्वेश्चन जे केमते हमें क्विक सॉल्व करि परिया सेटा नै कि हमें आगु की जे ओके तो मिक्सचर एलिगेशन सपोज हम एमती क्वेश्चन लिखिया there are two kinds of rice ये दुटा मेन लेवल क्वेश्चन खाली क्वेश्चन डिस्कशन करूची there are two kinds of rice first kind of rice is 20 rupees and the second kind of rice suppose 30 rupees in what ratio we should be mix two kinds of rice so that for kg will be 27 rupees दी प्रकार राइस अछि गोटे 20 रुपीस वाला राइस अछि आ गोटे आपनकर 10 रुपीस सॉरी 30 रुपीस वाला राइस अछि हम को रेशियो रे 20 रुपीस और 30 रुपीस रो राइस को हम मिक्स करे केजी टा हमरो केते 27 रुपीस हो क्लियर देखो एटा तो बहुत इजी कथा 27 - 20 = 7 30 - 27 = 3 मो एग्जाम जो माने मेन एग्जाम देबे से माने एग्जाम विषय बहुत सारा डाटा जानि दिबे को तो से रिलेटेड किछि कथा ही डिस्कशन करा पई चाहूनी तने एग्जाम कथा डिस्कशन करी अननेसेसरी टाइम वेस्ट कथा एबे कोनो से के समय भीतर किछि क्वेश्चन हम जे डिस्कशन करिया सेटा बहुत फ्रूटफुल हो ए रेशियो टा आपन आसला 30 - 27 = 3 27 - 20 = 7 तो ए रेशियो रे 3:7 रेशियो रे जदी मिक्स करे there are two kinds of rice गोटा ला 20 rupees आरटा आपन करला केते ना 30 rupees ए जो दी प्रकार राइस अछि मु एमदी को रेशियो रे मिसेले ए थर्ड राइस टा जो मिक्सचर प्राइस टा 27 रुपीस हो आपन को रेशियो ला 3:7 रेशियो रे मिसेले 27 रुपीस ए मिक्सचर एलिगेशन एक्चुअली करि थाय के देखो 20 लिखि जेटी 30 लिखि जेटी मझिटा लिखि 27 30 - 27 आपन को आसला 3 then 27 - 20 এটা আসলে 7 অর্থাৎ 7 + 3 এটা এডিশন করলে 10 হবো ये 20 और 30 रे गैप टा मध्ये 10 अर्थात ए जो डिफरेंस टा ही कोन हिता ना रेशियो आकार रे तळे
लेखा आइता ए जो 27 को पाइबा पई 20 और 30 भितरे कथाटा जदि एमति कहै जो 20 और 30 भितरे 27 को पाइबा को हेले 3:7 रो रेशियो रो आवश्यकता अछि except 3:7 you cannot find 27 as a mean term between of 20 and 30 is the fact समझी आपण को मानकर 10 रुपीस अछि आरटा 30 रुपीस अछि मानकर मझीटा को 16 रुपीस कर देखो 16 minus 10 जे आपण आसला 6 30 minus 16 आपण आसला 14 ये 14 6 मिसे देला हो 20 30 और 10 रो गैप हो 20 अर्थात ए 20 टा ही एई रेशियो रे ही मेंशन है 20 टा सपोज 10 और 30 अछि आर गैप टा हला 20 माने करम केजी टा 15 रुपीस करे आपन चाहू छी 15 minus 10 is equal to 5 30 minus 15 is equal to 15 हला 15 5 ए रेशियो टा सपोज 10 रुपीस अछि 30 रुपीस अछि केजी टा मु 20 रुपीस करे आपन चाहू छी एटा देखंतु 10 एटा मध्ये आपनकर 10 हला 20 बुझा पड़छ 10 10 मिसी हला 20 एटा 30 और 20 रे गैप हला आपनकर केते 20 क्लियर तेनु एमतिया कथा एठु हम बुझिले जे दीटा टर्म रो डिफरेंस टा ही तळे कोन हेता ना रेशियो आकार रे डिस्ट्रीब्यूट हे जाय आकु नै कि ना एक क्वेश्चन करबा देख डायरेक्ट कथा मेन एग्जाम दबो ताने बहुत सारा नॉलेज आपन जणा थिबो पूरा हम टिके पूरा हाई लेवल क्वेश्चन को जीवा सेटा हम कथाटा को आरंभ क्वेश्चन हला इना ना आलोए देखि देला भलो हो प्राय in an alloy 80% is copper remaining 10 clear in an alloy 80% is copper and the remaining 10 in an another alloy copper is 85%. Copper is 85%, and tin is 12%, and remaining others. In what ratio we should be mix the two alloys? We should be mix two alloys in an alloy 80% copper remaining tin, and another alloy copper is 85% and tin is 12%. In what ratio we should mix two alloys? So that mixture will be 50, so that tin will be 15%, tin will be 15% in the new mixture. Find the percentage of copper in the new mixture. Copper in the new mixture. बढ़िया क्वेश्चन टा आपन एटा क्वेश्चन का लाइन एन alloy 80% is copper remaining tin, in an another alloy copper is 85% and tin is 12%. In what ratio we should be mix two alloys so that tin will be 15% in the new mixture? Find the percentage of copper in the new mixture. दीटा alloy अछि आपनकर प्रथम रे 80% कॉपर अछि 20% आपनकर tin अछि सेकंड रे 85% कॉपर अछि 12% tin अछि मु चाहू छी 15% tin करिया पई ताले एथिरे tin अछि 20% एथिरे tin अछि 12% मु को रेशियो रे मिसेले एटा हो 15%
20 minus 15 is equal to 5. 15 minus 12 is equal to 3. If we should be mixed in this ratio 3:5 ratio, so that we will get the 15% tin in the new mixture. Kintu pachala question, find the percentage of a copper in the new mixture. Find the percentage of a copper in the new mixture. ताले कौन करिवा ना एटा हला 80%, एटा हला 85%. क्वेश्चन अछि एटा 3:5 रेशियो मिसी छी. मिक्सचर एडिशन करे कि आ डिफरेंस टा एटा को रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हेजी 8 3 plus 8 is equal to 5. 1 is equal to आपनकर हला 5/8. तो 5 is equal to केता हबो आपनकर 25/8. 25/8 को लिखि देले केता होना 3 whole 1/8. एपटा सेम केता हो 8 is equal to 5. 1 is equal to 5/8, then 3 is equal to 15/8. 1 whole 7/8. 3 whole 1/8. एटा 85 के जेटा 80 छ मझिटा को मिसई कि ना ऐड करिवा ताले एटा केते हला ना 83 whole 1/8%. 83 whole 1/8%. कौन 83 whole 1/8% ना कॉपर बुझा पड़ला. जे माने 85 और 80 माने भितर जे कम अछि तार अपोजिट की धरि कि ना मिसई ओटला 80 ओटला 3 whole 1/8. This is your 83 whole 1/8% copper in the new mixture. यदि आपन पचराला अदर टा केते हो ना दिटा को मिसई दो ओटला 83 whole 1/8 ओटला 15. 1/8 रहि गला 5 3 8 98. 98 whole 1/8 तामन स्टाला 1 whole 7/8 एटाला अदर क्लियर. Suppose I would take example दवा in an alloy ओटा क्वेश्चन लिखिवा in an alloy contains 90% copper. Contains 90% copper and 10% tin and 10% tin. In another alloy, in another alloy, in another alloy, copper is 93% and 4% is tin. In what ratio should both alloys be mixed? In what ratio should both alloys be mixed? Should both alloys be mixed? Both alloys be mixed so that the newly formed alloy, so that the newly formed alloy contains 9% tin. And also find the percentage of the copper in this. And also find the copper percentage in this. In an alloy contains 90% copper and 10% tin. In another alloy copper is 93% and 4% is tin. In what ratio should both alloys be mixed so that the newly formed alloy contains 9% tin, and also find the copper percentage in this. Very easy question.
can solve this question through your logic. 90% is copper and remaining tin means 10% आपनकर फर्स्ट alloy रहला tin, सेकंड alloy रे आपनकर असला 4% tin. ये दीटा को को रेशियो रे मिसिले मोर 9% tin हो. थर्ड 10 minus 9 is equal to आपनकर असला 1, 9 minus 4 is equal to आपनकर असला 5. मते ए रेशियो रे मिसिबार अछि 5:1 रेशियो रे मते मिक्स करियार अछि. ये 5:1 रेशियो रे मते मिक्स कले और 9% tin अछि. तो कॉपर परसेंटेज पचार जी एटा ना 90%, आरो अलॉय रे अछि 93%. एटा को रेशियो रे मिसी छी ना 5:1 रेशियो रे मिसी छी. आर डिफरेंस टा आपनकर केते हला ना 3, ए3 टा ए रेशियो रे ही डिस्ट्रीब्यूट हे 5:1 रेशियो रे. ताले 6 is equal to केते हला ना 3, 1 is equal to केते हला ना 3/6, 3/6 जे केते हला ना 1/2 बोले 0.5. तो एटा हला 0.5, एटा आपनकर केते हबो 2.5. तो 90 93 और 93 रे कम के ना 90 टा, 90 रे ऑपोजिट रे की अछि ना 0.5 अछि. तेबे एटा 93 ରୁ 2.5 सबट्रैक्ट करले 90.5 हबो. एटा मध्ये सेमती 90 रे 0.5 एडिशन करले 90.5. The answer हला 90.5. कौन करिया ये क्वेश्चन 4-5 तो माने 5 प्रकार 4-5 प्रकार सॉल्व हो करियो तो छाड़न दो. आउट क्वेश्चन लिखिवा. A sum of 41 rupees, a sum of 41 rupees was divided a sum of 41 rupees was divided 50 students. If each boy gets 90 pies and each girl gets 65 pies and each girl gets 65 pies, find the number of boys. Find the number of boys. A sum of 41 rupees was divided among 50 students. If each boy gets 90 pies and each girl gets 65 pies, find the number of boys. Here boys and another is girls. Boys पाउची 90 pies, girls पाउची 65 pies. किंतु 50 जन भितरे 41 टंका बंटा. जने पिला पाइबो केते ना 41/50 से बॉयज हो की गर्ल्स. तबे इनटू 2 डेसिमल कर दो. ता माने 2 के 2 2 चो 8 82 हमको तामने 82 सह कर दिले प्राइस 82 टका टा प्राइस से कन्वर्ट कर दिले एटा 0.42 तामने 82 प्राइस पेगा गोटे पिला. 90 minus 82 is equal to 8. 65 minus 82 minus 65 is 70. तामने ए रेशियो रही number of students अछन. ताले 17 plus 8 हला आपनकर 25. 25 is equal to आपनकर हला 50. 1 is equal to असला 2. 17 टा आपनकर असला 34.
8 टा आपन आसला केते 16 ताल 34 टा कोन हला आपन बॉयज देन 8 टा आपन कोन हला 16 आपन कोन हला ना गर्ल्स 8 हला बुझा पड़े ए जो क्वेश्चन आको भिन्न भिन्न प्रकार सॉल्व करियो यदि क्वेश्चन ही सॉल्व करी तो चारि पांच प्रकार सॉल्व हो किंतु सेटा मैटर करू क्वेश्चन पढिला परे आपनकर जहा अप्रोचिंग रहिबो दैट इज योर प्योर नॉलेज तने ऑफलाइन रे हम कोन करि थाउ जे तबे पिला को प्रिपेयर करि थाउ ता खाता हम देखु जे क्वेश्चन ता दे दउ से केमति अप्रोच करूची ता अप्रोचिंग स्टाइल ता जो जदी सेटा आ चेंजेस करी न हो जीवा प्रत्येक क्वेश्चन से तले पढुची ताकु सी प्रकार अप्रोचिंग जेतबे से करूची हम कोन करथाउ ना सेम से जेमति करे ताको हम सेमति ही प्रैक्टिस करे जहा को आसेनी बा जे जानिनी पाठ तो सी पांचटा तक ता पे नुवा तो ताको बेस्ट मेथड ता जो कि ताको अलगा टॉपिक रे हेल्प करिवो ए टॉपिक रे हेल्प करिवो इजीली सॉल्व करि परिवो से अनुसार हम ता प्रैक्टिस करिवो एठी जेतु ऑनलाइन क्लास होची तनो मु कोन करछि ना केतोडे क्वेश्चन की डायरेक्ट डिस्कशन को जे गुटे ट्रिक्स रे कहूची जोटा कॉमन ट्रिक्स समस्त जानि छथि बा न जानि थिले मध्ये आपको जानि कि ना हम यूज करि परिबा क्लियर एबे हमें आ गोटे क्वेश्चन के जीवा a student gets plus 3 marks for each right answer and minus 0.5 for each wrong answer. In an exam consists of 250 questions, if the student gets if the student gets 477 marks in the exam, find the number of wrong questions attempted by student. Find the number of wrong questions attempted by the students. If the student gets 477 marks in the exam, find the number of wrong questions attempted by the students. गोटे ठीक आंसर पाई जणे 3 मार्क पाउछ दे भूल आंसर पाई जणे बा 0.5 मार्क पाउछ से 250 टा क्वेश्चन रे 477 मार्क्स से पाइछ तो गोटे रे केता हो ना 477 बाय 200 आधरे 4 मल्टीप्लाई कर दो आधरे 4 मल्टीप्लाई डेसिमल कर दो 428 8 गुणा 2 428 30 16 गुणा 3 417 डिवाइडेड बाय एटा केते हला ना 1000 तमन एटा लागते 1.908 तो 3 ରୁ 1.908 सबट्रैक्ट करले एटा आपनकर केते हो ना 1.92 1000 ରୁ 908 सबट्रैक्ट
यदि 0.5 सब्ट्रैक्ट करियो 1.908 माइनस माइनस 0.5 तान 0.5 टे ऐड हेजु 2.408 क्लियर किंबा जदि ता कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हबो ताले को अलगा वे भी कर परिबा एटा बर्तन याको कैंसिल करी कि ना हमें 250 की नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम पाइ पे अलगा रे केमति करियो देखन जस्ट खाली हे देखो मु कोन कली 250 क्वेश्चन अछि गोटे ठीक आंसर पई 3 मार्क मिलनो सब जक ठीक अछि 250 टा जक माने करो ठीक अछि टोटल दाले केते मार्क से पाई थाना ना 750 तो गोटे पई -0.5 मार्क तर डिडक्ट होई 250 टा माने करो भूल गया तो एटा केते मार्क कटि जाला -125 एमित से केते मार्क रखिस ना 477 750 रो आपन 477 पड़ले एटा आपन 273 देन 477 माइनस माइनस 125 एटा आपन 603 602 7 5 बार 2 रखना 1 7 3 प्लस 600 याको हमें कैंसिल कले एटा 86 देन एटा हो केते 30 7 है डिवाइड करा 7 है आप डिवाइड कर देना 86 हो आगु 7 है डिवाइड कर दे 7 3 21 39 ठीक ए रेशियो रे हम डिस्ट्रीब्यूट कर 80 30 110 9 6 15 115 हां 80 30 110 9 6 15 110 प्लस 15 कितना 125 125 जे मोर 250 टा क्वेश्चन एक जे आपनकर 2 है तो से 50 जी अटेम्प्टेड बाय द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस 39 39 2 जा केता हो 78 ताले 78 मोर हला नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर A boss agency has out of question a boss agency has 108 boss he sold some boss at 9% and the rest at 36% profit. A boss agency has 108 boss. He sold some boss at 9% and the rest at 36% profit. Thus he gains 17% on the sales of all his buses. Thus he gains 17% profit on the sale of all his buses. On the sale of all his buses. Find the number of bus sold at. Find the number of bus
sold at and the number of bus sold at 36% profit. Okay. A bus agency has 108 bus. He sold some bus at a 9% and the rest at a 36% profit. So that he gains 17% profit on the sales of all each bus and the number of bus sold at a 36% profit. अच्छा किसी बस से 9% प्रॉफिट रे बिक्री करछि आउ किसी बस से 36% प्रॉफिट रे बिक्री करछि ओवरऑल से 17% प्रॉफिट पाइछि तल 17 minus 9 is equal to 8 36 to 7 गले आपन को एटा लागते 19 तल एई रेशियो रे ही बस सेल है 19 और 8 मिसला आपन को केता हो 27 is equal to 108 1 is equal to 4 तो 8 is equal to कितना हुआ अपने को 8 4 जा 32 19 is equal to कितना हुआ 19 into 4 is equal to कितना हुआ 76 तार क्वेश्चन आसला आपनकर 32 बसटा से 36% प्रॉफिट रे बिक्री कर अब 76 बसटा से आपनकर 9% प्रॉफिट रे से बिक्री कर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात A man purchased a pen A man purchased a pen and a book for 1300 rupees. He sold the pen at a profit of he sold the pen at a profit of 20%. And the book at a profit of and the book at a profit of and the book at a profit of 25%. In this way, his total profit was in this way his total profit in this way his total profit was 23 whole 1 by 13%. Find the cost price of the book. Find the cost price of the book. A man purchased a pen and a book for 1300 rupees. He sold the pen at a profit of 20% and the book at a profit of 25%. In this way, his total profit was 23 by 3%. Find the cost price of the book. सीधा आपनकर गोटेला बुक रहला पेन टा बिक्री करछि 20% प्रॉफिट रे बुक टा बिक्री करछि 25% प्रॉफिट रे मझिटाला आपनकर 23 होल 1 by 13 एटा का अपन सब्ट्रैक्ट कले एटा केता होबो ना 3 होल 1 by 13 एटा का अपन सब्ट्रैक्ट कले केता हो 25 23 गले 2 तब 2 रो 1 चले गेला 1 होल 12 by 13
25 by 13 एटा आपन 39 है 40 by 13 40 गला 5 रे काटले 5 रे काटले 8 ए रेशियो रे ही पेन आ बुक अछि 13 is equal to 1300 so 1 is equal to 100 then 5 is equal to 500 8 is equal to 800 ताछि पचारजी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक ताले केता हो बुक रो कॉस्ट प्राइस केता हो 800 थोड़े क्वेश्चन हम डिस्कशन करिवा हाउ मेनी केजी ऑफ sugar how many kg of sugar worth 3.60 rupees per kg should be mixed with 8 kg of sugar worth 4.20 rupees per kg such that by selling the mixture at 4.40 rupees per kg there may be a gain of 10%. There may be a gain of 10%. D Rashmi 800 correct answer. How many kg of sugar worth 3.60 rupees per kg should be mixed with 8 kg of sugar worth 4.20 rupees per kg so that by selling the mixture at 4.4 rupees per kg there may be a gain of 10%. Answer कहिबे कि रश्मि डी रश्मि एक क्वेश्चन आंसर कहिबे कहलो जे टाइम देउछि को देखो गोटला 3 टका 60 पैसा पर आरटला 4 टका 20 पैसा पर से कोन करू ना 4 टका 40 पैसा बिक्री करबे त 10% लाभ हो तो कॉस्ट प्राइस केता ना 100 बा 110 तो 11 काटले एटा केता ना 4 टका 1124 4 टका 3 टका 60 पैसा वाला 40 पैसा 4 टका 20 रु 4 टका रेशियो ला आपन रहला 1 अच्छा हाउ मेनी केजी ऑफ सुगर 3 टका 60 पैसा ताले एटा 1:2 होला तो दुईटा जे मोर केते देछि ना 8 केजी देछि अरे 4 टका 20 पैसा से 8 केजी दुईटा जदी 8 केजी होला अबरे 1 टा जे केता हो ना 4 केजी तो आंसर के देला हाउ मेनी केजी ऑफ सुगर 4 केजी तो आंसर केते दी आसीबो 4 आसी क्लियर
गोटे क्वेश्चन करेगा a man purchase 5 horse and 10 cows. 5 horse and 10 cows of 10,000 rupees. He sold the horse. He sells the horse at 15% profit. He sells the horse 15% profit, and a cow at 10% loss, and cow at 10% loss. Find the cost of each horse. Sorry. Find the cost of each horse. Find the cost of each horse. If he earns a profit, if he earns a profit of 375 rupees. Clear? A man purchases 5 horses and 10 cows of 10,000 rupees. He sells the horse 15% profit and a cow at 10% loss. Find the cost of each horse if he earns a profit of 375 rupees. देखो 15% profit horse रे करिछि 10% loss cows रे करिछि एटा आपन horse एटा आपन cows total cost price है 10,000 से 375 rupees profit करिछि 375 divided by 10,000 into 100 0 0 कटि गला ता माने एटा आपन केते लगा 3.75 15 minus 3.75 that means 11.25 3.75 minus 10 this is your 13.75 okay तो आपन देखो 25 रे काटिबे 25 5 is 25 5 ja 125 then 25 5 25 4 ja then 25 5 5 रे काटला आपन इसको 11 is 2 रे केते आछो 9 तब 11 plus 9 ला 20 20 टा जे आपन केते लाना 10,000 1 टा जे केते आपन ना 500 11 टा जे केते ना 5500 9 टा जे केते ना 4500 ताले 10 cows रो कॉस्ट हला 4500 गोटे काउ रो कॉस्ट हो केते एठी आपनकर 450 सेमति 10 cows रो कॉस्ट हला 5500 तो गोटे काउ रो कॉस्ट केते हो ना 550
Two vessels contain, another question. Milk and water. Two vessels contain milk and water. In the first vessel, milk is 90%. In the first vessel, milk is 90%. Milk is 90%. And in the second vessel, milk is, and in the second vessel, milk is 40%. Milk is 40%. In what ratio should he mix? In what ratio should he mix? In what ratio should he mix both these vessels? Both these vessels to obtain a new mixture. To obtain a new mixture which contains 70% milk. Which contains 70% milk. And water in the first vessel, milk is 90%, and in the second vessel, milk is 40%. In what ratio should he mix both these vessels to obtain a new mixture which contains 70%? बहुत easy question. One is 90%, another is 40%. Mean term will be 70%. 90 minus 70 is equal to 20. 70 minus 40 is 30. In this ratio, in the ratio 3:2, we should be mixed. देखो 3:2, correct Baba, answer. Next, in the 75 liter of mixture, in the 75 liter in the 75 liter of mixture of soda and water, of mixture soda and water, in the 75 liter of mixture soda and water, is 4:1. The quantity of water required to make the ratio of soda and water 3:1 is what? How much water? Suppose question here. How much water should be added in the mixture? Should be added in the mixture should be added in the mixture. The ratio of soda and water will be, the ratio of soda and water will be, 3:1. Okay. In the 75 liter of mixture, soda and water is 4:1.
how much water should be added in the mixture so that the ratio of soda and water will be 3:1? Can you tell me the question's answer? 75 liter of mixture, that means 4:1, 5 is equal to 75. Then 1 is equal to 25, sorry, 15. Then 15 4s are 60. Then 15 1s are 15. What is 60 soda? And what is water? 15 liter it is your water. How much water should be added? The ratio will be 3:1. If सोडा आगुरी जति सोडा थिला तो एबे सेति की सोडा जी सोडार कोनोसी परिवर्तन ही है तो 3 टा जदि मोर 20 हला तो अच्छा 3 टा मोर जदि 60 हला 1 टा जदि मोर एकोटा केता ना 20 हो एटा थिला 15 एबे होची 20 तामने केते ऐड हैची ना 5 ही ऐड हैची तले 5 लिटर कोन मोर वाटर ही ऐड है किबा आपण जे को मिक्सचर एलिगेशन रे करिवे केमति करिया मिक्सचर एलिगेशन रश्मि बढ़िया आंसर दे गॉड ब्लेस यू बाबा देख सोडा हला आपनकर गोटे हला सोडा गोटे हला वाटर एटा छी 75 माने 5 इज इक्वल टू 75 1 is equal to 15 तामने 60 नहीं परसेंटेज हिसाब कर दवा एटा छी 4:1 4 by 5 तामने एटा हला 80% आर एटा हला 20% ठीक तो मोर कोन ऐड हो ना वाटर ही ऐड हो इनिशियली केते परसेंट वाटर थिला मोर 20% वाटर थिला एबे वाटर ऐड हो ने सेटा हला 100% एबे मेन का वाटर एटा के दला 3:1 है तामने 1/4 1/4 टा जे आपनकर हला 25% तो एटा हला मोर केते 5 एटा मोर केते हला आपनकर 70 20 and 100 this is your 25 then it is 75 and it is 5 तो एथे केते लीटर थिला मोर 75 लीटर ठीक है तो एटा मोर केते लीटर है जीवो ना 5 लीटर है आंसर हला 5 और क्वेश्चन लिखिवा in a mixture of milk and water in a mixture of milk and water there is only 26% is water after replacing the mixture with 7 liters of pure milk with 7 liters of pure milk the percentage of milk in the mixture becomes 76%. The quantity of mixture is what? Find the quantity of mixture. Find the
quantity of mixture. In a mixture of milk and water, there is only 26% water. After replacing the mixture with 7 liters of pure milk, the percentage of milk in the mixture becomes 76%. Find the quantity of mixture. 26% water अच्छी तामाने 74% कौन अच्छी मोरना मिल्क अच्छी एथिरु मो 100% जानी प्योर मिल्क जोटे कि मोरला 76% 100 minus 76 एटा आपन आसला 24 76 minus 74 एटा आसला आपन केते एटा 2 क्लियर देन आपको कैंसिल करले एटा केते हो ना 12:1 1 टा जदी मोर 7 लीटर हैला ताले 12 टा जो मोर केते हो ना 84 लीटर ताले से पचाची क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 7 लीटर हैला आपनकर एथिरे में एटा दिला एटा 84 लीटर ला 7 plus 84 is equal to केतला 91 तो 91 लीटर ही मोर हैला क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्लियर एटा गोटे चैप्टर डिस्कशन हैला हम आ गोटे चैप्टर के जिबा आ गोटे क्वेश्चन एथिरु करिवा ये in a wine 32% spirit in a wine 32% spirit some quantity taken out and replaced some quantity taken out and replaced with another type that contains 18% spirit that contains 18% spirit. Now the spirit in the bottle is 28%. Now the spirit in the bottle is 28%. Find what part of the wine is taken out. Find what part of the wine is taken out. In a wine 32% spirit and some quantity taken out and replaced with another type that contains 18% spirit. Now the spirit in the bottle is 28%. Find what part of the wine is taken out. देखो एटा बॉटल अछि आदरे मने करो फूल अछि कोन कहते ता फूल अछि आदरे 32% स्पिरिट अछि एती पार्ट हम काढी नै गले एटाटा बॉटल अछि आदरे 18% स्पिरिट अछि ए स्पिरिट पड़ले एट जे आड हैला जो पार्टटा खाली हैला एटा आड हैला ता माने एटा कोन लागो ना एटा ही मोर एम्प्टी पार्टटा फुल कला ए जो बॉटल रु जेति की गला याद रे एम्प्टी पार्टटा को ही फुल कला एटा मोर कोन हला रिमेनिंग पार्ट थिला एटा फुल थिला प्रथम फुल थिला तो एबे कोन हला कि ना एति की मो पाखरे रखी कि ना आउ सब बाहर कर देनी एते को मोर बाहर को चली गला तने ए जोटा रहिला हि रिमेनिंग टा हला 32% एथरु जाई कि ना आदेश ता आड हला अर्थात जेति की एम्प्टी हला याद रे गला एति मोर हला एम्प्टी होबा पे ठीक अछि तो एटा हला मोर केते ना 18%
एबे मिक्सचर टा केते हिची ना 28%। 32 ରୁ 28 गला 4, 28 ରୁ 18 गला 10, तामाने रिमेनिंग टा मोर 10 थिला, एठो पर 10 थिला, एटा भी गला मोर 4। ना बुझियो, फाइंड what part of the wine is taken out, तामाने 4 पार्ट टा ही मोर 4/14 हो, 4 पार्ट टा ही मोर बाहर चल जायतिला, एटा आपन मोर केते हो ना 2/7। आंसर आसला आपन मोर एटा केते ना 2/7। क्लियर? के पढ़े दवा रिप्लेसमेंट कांसेप्ट, तापर अलगा चैप्टर उठिके जिवा। रिप्लेसमेंट कांसेप्ट कोन देखो, a vessel is full of a vessel is 80 liter milk, 8 liter taken out and replaced by water. A vessel is full of 80 liter milk, 8 liter milk taken out and replaced by water. Again 8 liter milk is taken out, 8 liter milk taken out and replaced water. Replaced by water. Find the amount of milk. Find the amount of milk in the final mixture. In the mixture. तार फॉर्मूला अछि रिप्लेसमेंट फॉर्मूला। V whole into V minus x by V whole to the power n। एठी वॉल्यूम कहले 80 minus x कहले 8 लीटर थरो थरो बाहर छी, डिवाइडेड बाय 80 whole to the power n, n कहले दी थरो क्वेश्चन ताने 80 into 72 by 80 into 72 by 80, 9 by 10, एटा आपन 9 by 10, 0 0 कटि गला, अर्थात 8 into 9 into 9 divided by 10, 9 81 8 के 8 8 के 8 64, 64.8 liter. Find the amount of milk in the final mixture after two operation, 64.8 liter milk के रहिला, बुझा बुझी तो नेक्स्ट पार्टनरशिप पढ़ेवा, जे छोट छोट चैप्टर ए चैप्टर क्वेश्चन आसुची, सेति पई हमें देखिवा दी तीन खंडे चैप्टर को कवर करिया पे। A and B start a partnership. A and B start a partnership with 1500 and 2000 rupees. With 1500 and 2000 rupees. ठीक है। After 4 months, she also joined. After 4 months,
she also joins after 4 months. She also joins the business with 2250 rupees. 2250 rupees. If we withdraw his capital, after 9 months, then find the share of profit, then find the share of profit of V in a total profit of 900 rupees. A and B start a partnership with 1500 rupees and 2000 rupees. After 4 months, she also joins the business with 2250 rupees. If View withdraws his capital after 9 months, then find the share of profit of B in a total profit of 900 rupees. তাহলে আমি কোন করিবা না এ টঙ্কাটা পুরা মাসକୁ লাগিছি ফুল ইয়ার মানে পুরা বর্ষକୁ লাগিছি তেଣୁ ଏଟା ହେଲା কোন ମୋର ନା 1500 into 12 ସେମିତି B ଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 2000 into 12 ସେମିତି 2250 ଆସିଲା into କେତେ ହେଲା 8 तो एटा ଆସିଲା ମୋର 1800 एटा ଆସିଲା ମୋର ବି କେତେ 2000 into 9 months सॉरी एटा 9 हबो 2000 into 9 एटा आपनकर 1800 देन एटा आपनकर केते आसिला 950 085 जा 40 एटा 1800 एटा गोटे जीरो काटि दिया जे गोटे जीरो काटि दियो एटा जीरो काटले एटा 1800 हबो होला 8 5 40 0 4 4 8 9 16 20 0 2 8 9 16 18 एटा भी 1800 ताने रेशियो टा केते आसला मोर 1:1:1 टंका केते हला 3 900 1 केते हला 300 ताले ए रो शेयर हला 300 बी रो शेयर हला 300 एंड सी रो शेयर हला मोर केते 300 ये सब 300 300 जी रश्मि 300 correct क्वेश्चन ला अपन आ उले दबा A and B are two partners start a business. A and B are two partners start a business by investing a capital. Start a business by investing a capital 25,000 rupees and 35,000 rupees. 25,000 rupees and 35,000 rupees. And decide to share their profit
and decide to share their profit according to their capital. According to their capital. But she joins the business on a condition that they will distribute the profit equally. They will distribute their profit equally equally and for that she gives 2,20,000 rupees to A and B. Find in which ratio find in which ratio find in which ratio A and B will distribute A and B will distribute that amount. A and B are two partners start a business by investing a capital 25,000 rupees and 35,000 rupees and they decide to share their profit according to their capital. But she joins the business on a condition that they will distribute their profit equally and for that she gives 2,20,000 rupees to A and B. Find in which ratio A and B will distribute that amount. Can you tell me the question's answer? देखो ए आने के कितना 25,000 बी आने के कितना 35,000 तो ए रेशियो रे टंकाटा डिस्ट्रीब्यूट हो जहा प्रॉफिट आसीबो जहा आपनकर प्रॉफिट आसीबो ए रेशियो रे डिस्ट्रीब्यूट हो तो 3 0 कटि गला 5 रे काटले 5 रे काटले केते हला 7 तो प्रकृत रे मने कर 5 + 7 12 हला प्रॉफिट 12 हला आपनकर प्रॉफिट ए रो शेयर केते हला एथिरे ना 5 बी रो शेयर एथिरे केते हला ना 7 सॉरी किंतु सी एस जॉइन कला कंडीशन रखिला
जहा किछि प्रॉफिट हेछि समान भाव रे तीन जनकर बंटा हो समान भाव बंटा हले 12 टा को प्रॉफिट हेछि 12 मोर समान भाव रे तीन जन भीतर बंटा हले एटा हला सी तो एबे कथा हला कोन ना ए पाइबो 4 बी पाइबो 4 सी भी पाइबो 4 किंतु ए बार रु पाउथला केते 5 किंतु एबे ए बार रु केते पहुंची 4 तर लॉस कला केते बा डिफर हला केते 1 एर हला 1 डिफर बार रु सेमति बी पाउथला केते 7 एबे पाउची केते 4 तमन तार केते कम गेला ना 3 कम सीधा अगर आगु नथिला एबे जॉइन कला 1:1 रेशियो घंटा तो सी जो टंका देछि 2,20,000 जे जेमिति क्षति छै से अनुसार से टंका टा ये गोटे गुण लॉस करछि बी 3 गुण लॉस करछि त माने 4 गुण बोला 2,20,000 रुपीस गोटे गुण गला केतना 55,000 तीन गुण केतना ना 1,65,000 तो ये 55,000 एरो और 1,65,000 कारण आबी से जो 2,20,000 ये रो शेयर हला 55,000 और बी रो शेयर हला 1,65,000 क्लियर आउट क्वेश्चन करेवा ये इन्वेस्ट 1/6 ये इन्वेस्ट 1/6 part of total capital invests 1/6 part of total capital for 1/6 time for 1/6 time B invest 1/3 we invest 1/3 part of total capital part of total capital for 1/3 time for 1/3 time and C invest the rest capital for full time if the total profit is if the total profit is 23,000 rupees 23,000 rupees find the share of B find the share of B A invest 1/6 part of total capital for 1/6 time B invest 1/3 part of total capital 1/3 part of total capital for 1/3 time and C invest the rest capital for full time. If the total profit is 23,000 rupees, find the share of ताला में लिखिवा एरो ला 1/6 capital into time is equal to profit B रे सेम देला 1/3 into 1/3 पूरा टोटल कैपिटल ला 1 एथिरु ए रो शेयर ला 1/6 और B रो शेयर ला 1/3 1 minus आरो एलसीएम ला 6 एटा ला 1 एटा ला 2 3/6 1 minus half is equal to half capital for full time half capital for full time ताम ला 1/12 एटा ला 1/9 एटा ला 1/2 तो रेशियो बार करिया 1/12 is to 1/9 is to 1/2 ताले 12 ना केते लाटी 108 नै
नहीं 36 नहीं गला हो 36 नहीं गला टोटल 12 ना 2 एलसीएम वाला 36 एटा ला 3 एटा ला 4 एटा ला 2 हेलो 18 12 3 36 9 24 18 18 4 केते हला 22 22 3 केते हला 25 1/6 plus 1/3 एला 6 एलसीएम वाला 6 1 3 2 जा 2 2 plus 1 3 3/6 वाला हाफ कैपिटल तो हाफ कैपिटल अपन करला फुल टाइम सॉरी बाबा फुल टाइम वाला 1 तो ठीक है फुल टाइम वाला 1 हले अपन करला हाफ हला 1/12 1/9 1/2 36 32 36 9 36 38 22 25 এটা কোন ক্যালকুলেশন রুলস কারণ 23000 এর 23 হওয়া দরকার सॉरी बाबा मु टिके भूल कर क्षमा करे कारण एटा 1/2 अछि मग लिखि देछि 1/12 एहे एटा एक्चुअली 1/2 हो 2 हेले आपनकर आवरी हमें कोन करबा ना एलसीएम टा बाबा 292 रो एलसीएम नै जवा 18 ठीक अछि केतना आपनकर 18 ना एटा ठीक अछि तो 1/12 एटा थिला এটা 1/12 ঠিক আছে তাহলে এটা 36 এটা ঠিক 32 36 9 36 এটা 2 হলে এটা হলো 36 ভুল হয়েছে এটা 1/6 into 1/6 এটা 36 হবে এটা 12 লেখা আছে সে ভাবছি এটা খুব সিলি মিস্টেক ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଅସୁବିଧାରେ ମତେ ପକଉଛି 6 6 ଟା 36 ठीक है टिके क्षमा करिवो भूल हेगला एटा सेमति आपनकर आसीबो केते ना 36 तो 36 आसीले एलसीएम गला 36 36 हेला आपनकर एटा ला 1 एटा ला 9 36 एटा ला 2 हेला 18 एबे एटा हेला 18 4 22 1 23 23 is equal to 23,000 1 is equal to एटा ला 1000 find the share of b b ର share चे एटा ना 4 is equal to केता हबो ना 4000 बड़ा क्वेश्चन होगा A and B rent a pasture for 10 months. A puts in 100 cows. A puts in 100 cows for 8 months. How many cows can be put? How many cows can be put? How many cows can be put in for the remaining 2 months? For the remaining 2 months, if he pays 50% more than A. 50% more than A and B rent a pasture for 10 months. A puts in 100 cows for 8 months. How many cows can be put in for the remaining 2 months? If he pays 50% more than A. তাহলে 10 months পাই
आनिथिले से रेंट रे आनिथिले ये कौन करछि ना 100 काउच 8 मंथ्स पई यूज करछि आ रोइला रिमेनिंग मंथ्स रोइला के x माने कर इज इक्वल टू 50% मोर देन a तमने एटा जदी 150 हला कारण एटा हमर 100 b 8 रो 50% अधिका पेमेंट करछि तमने एटा केते हला 100 बा 150 बोले एटा अपन करला 2/3 तो 2/3 रे 2 रे काटले एटा अपन कर केते हला 4 ये 2 रे काटले केते हला 2 x इज इक्वल टू केते हो 2 100 200 3 इज इक्वल टू 600 ताहले b कोन करिवो ना 600 काउस 2 मंथ्स पई रेंट रख बुझा तो हमारा आंसर असला केते ना 600 क्लियर ABC are three partners A, B and C are A, B, C are three partners with a capital of with a capital of 8 lakh and 12 lakh and 15 lakh 8 lakh comma 12 lakh and 15 lakh and they decide to share their profit and they decide to share their profit and they decide to share their profit according to the ratio of their capital according to the ratio of their capital according to the ratio of their capital but A is working partner but A is working partner and takes 12 whole 1 by 2 percentage of total profit as salary. If A receives 5,200 rupees from the business, find the amount of total profit. Find the amount of total profit. ABC are three partners with a capital of 8 lakh, 12 lakh and 15 lakh and they decide to share their profit according to the ratio of their capital. But A is working partner and takes 12 whole 1 by 2% of total profit as a salary. If A receives 5,200 rupees from the business, find the amount of total profit. देखो ABC को इन्वेस्टमेंट रेशियो है जे 8 लाख 12 लाख आउ 15 लाख जहाँ प्रॉफिट आसो ए रेशियो रे हमर डिस्ट्रीब्यूट होबा किंतु एटा मानकर प्रॉफिट है ये प्रॉफिट रो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट रो ये जो प्रॉफिट है
ये प्रॉफिट रो 12 होल 1/2% आगो नै जो सैलरी बाबत के नै ताने 1/8 टोटल प्रॉफिट जदी 8 भाग हेला तो दादर 1 भाग के नै जीवो ए नै जीवो 1 भाग एटी ए नै जीवो तापरे आउ जो 7 पार्ट रहिला ए जो 7 पार्ट ता ही ए रेशियो रे डिस्ट्रीब्यूट हो 8:12:15 रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो 12 टी 20 पास 15 के देला एटा 35 आको एडिशन कर 35 माने करो एटा हला 37 जदी हला 35 1 डाला 5 तो 8 टा के देला पर 40 माने करो ये टोटल प्रॉफिट हला 40 जदे जानि पले तो टोटल प्रॉफिट को अपन 100 नै ता के x नै ता मु एटा कोन करला 40 नै जदी एटा 40 हे गला टोटल प्रॉफिट 40 हे गला केमति नेली ना 1/8 1/8 रे जे बोलला 8 भाग रु गोटे भाग ए नै जो और होला 7 भाग ये 7 भाग टा ही रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होबे रेशियो टा ही मोर सबुडा मिसी देले 35 हो 7 रा 35 वाला 1 डाला 5 टोटल प्रॉफिट हम कंसीडर करी 40 40 रु 1/8 पार्ट अर्थात 40 रु 1/8 जगह देला हम 5 पार्ट ए नै जो अर्थात ए रो बर्तन टंका हे गला 13 और रही गला केते 35 कारण 40 रु 5 पार्ट ही चली गला ठीक है नै गला बाकी रहला 35 ए जो 35 पार्ट ता ए रेशियो रे डिस्ट्रीब्यूट 8 12 15 माने ए शेयर ही रहइबो तो बी रो भाग हला 12 सी रो भाग हला 15 बुझा पड़जी तो एबे कोन हला ना तो से कहूची कि इफ ए रिसीव्स 5200 प्रॉफिट तब ए हला 13 टा जदी हला 5200 लिखि दबाटी 13 टा जदी हला 5200 1 टा अपन करला 400 40 टा अपन करला टोटल प्रॉफिट हला 40 थिला 40 टा जे अपन हला 14 into 400 हला अपन 16000 तो आंसर असला अपन केते 16000 टोटल प्रॉफिट हला 16000 16000 क्लियर आउट क्वेश्चन लिखियो A and B are two partners with a capital of 50,000 and 70,000. A and B are two partners with a capital of 50,000 and 70,000 and agreed that %70 of the total profit should be divided equal between them. Should be divided equally between them. A and B are two partners with a capital of 50,000 and 70,000 rupees and agreed that 70% of the total profit should be divided equal between them. And the remaining profit in the ratio of their capital. And the remaining profit in the ratio of their capital. In the ratio of their capital. If one partner gets 90 rupees more than the other, 90 rupees more than the other, 90 rupees more than the other, find the total profit. Find the total profit. A and B are two partners with a
capital of 50,000 and 70,000 and agreed that 70% of the total profit should be divided equal between them. And the remaining profit in the ratio of their capital, one partner gets 90 rupees more than the other. Find the total profit. अच्छा, तो 50 A यानी कि अस्सी कितने ना 50,000, B यानी कि अस्सी कितने ना 70,000, तो रेशियो शेयरिंग डाला कहते ना 5:7. A and B are two partners with the capital 50,000 and 70,000. They agreed that 70% of total profit, 70% profit टा कौन ना equally बंटा, equal बंटा. तामने जो 30% profit रहेला, एटा ही मोर 5:7 रेशियो बंटा 12 is equal to 30%. जणे पाइबो 5 पार्ट, जणे पाइबो 7 पार्ट. तो जणे जणे 2 पार्ट अधिका पाइबो. तो 2 पार्ट टा ही मोर जे केते ना 90 हे गला. 1 टा जे आपनकर केते हला ना 45. और मिसी किना 7 5 12 पार्ट केते हला ना 12 into 45. तामने एटा जे मोर हला 30%. 100% केते हो ना 100 by 30. 6 रे काटले आपनकर 5, 6 रे काटले 2, 5 रे काटले एटा आपनकर 9. 9 2 जा 1800. ओके. क्वेश्चन पचारची जे फाइंड द टोटल प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट आपनकर केते होबो ना 1800. अरे क्लियर. जणे जणठु 90 रुपीस अधिका पाउची, तारे जणे 7 पार्ट पाउची, आउ जणे केते पार्ट पाउची 5 पार्ट पाउची. तारे 2 पार्ट अधिका पाउची. 2 पार्ट टा जे मोर हला 90, 1 पार्ट टा जे हला 45. तो 7 plus 5 हला 12 पार्ट. 12 पार्ट पर 55 60 सुना 20 48 4 520. ये 520 टा ही मोर जे केते ता 30%. मोर किंतु कोन दरकार ना 100% दरकार. फाइंड द टोटल 100 by 30. तो 0 0 30 रे काला 18 54. 520 टा नाडी 52 60 0 कोला 6 548 54 540 टा. क्लियर. रेशियो प्रोपोर्शन किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा. ठीक अछि. रेशियो प्रोपोर्शन किछि क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा. रेशियो देखिया किछि दरकार नहीं. स्टार्ट करबा. 2366 rupees is divided among 2366 rupees is divided among 8 men, 10 women and 10 children. 8 men, 10 women and 10 children. Each man gets 25% more than each woman. Each woman gets 25% more than each child. Each man gets 25% more than each woman. Each woman gets 25% more than each child. Clear? Find the amount received by each woman. Find the amount received by each woman. 2366 rupees is divided among 8 men, 10 women and 10 children.
each man gets 25% more than each woman. Each woman gets 25% more than each child. Find the amount received by each woman. देखो man, woman, child, children, not child. Each man gets 25% more than each woman. I mean 25% more means it 4 or 5. 25% more means that's soil it is 25 होगा ना. इधर काट दे 5 4. Each woman gets 25% more than each child. এটা মানে 4. এটা 4 होला, এটা 5 होला. এটা জানি থিবো. মেন লেভেল एग्जाम দেবো এটা জানিয়া দরকার না. तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 4 जा 60. तो 8टा मेन अछंती, 10टा वुमेन अछंती, 10टा चिल्ड्रन अछंती. आपको हम मल्टीप्लाई कले इटाला 200 ए रेशियो रे टंका नाही मोटा 200 200 देन एटा के दला ना 160. तो 0 0 0 कैंसल्स. 4 एकटले 5 4 एकटले 5 देन होला 5:5:4 रेशियो रे टंकाटा डिस्ट्रीब्यूट. 5 5 10 से 14 14 इज इक्वल टू टंका डाला हमर केते आपनकर 2366. 14 के 14 76 हेले 14 के 50 70. One is equal to 169. The one डाला 169. तो वुमेन टा के देला ना 5 5 पे जी केता ना 169 into 5. एटा केतरा चिल्ड्रन भीतर बंटा होची ए केतरा वुमेन भीतर बंटा होची ना 10 टा हम ताली ईच वुमेन केते पावे ना 169 into 5 divided by 10. Then 5 9 जा 45 5 4 carry 16 5 जा 80 plus 4 84. ताने 84.5 वेला मोर कोन ना गोटे वुमेन पाइबो 84.5. क्लियर. क्लियर सर मैडम. नेक्स्ट नंबर को जीवा. The ratio of expenditure of ABC, the ratio of expenditure of ABC A, B and C is 16:12:9. And their total income is, and their total income is, and their total income is 1530 rupees. Find the share of B's income. Find the share of B's income. If they share 20%, 25% and 40% of their income, and 40% of their income. Find the 40%. The ratio of expenditure of ABC is 16:12:9 and their total income is 1530. Find the share of B's income if they share 20%, 25%, 40% of their income. This is the question. तो आपण देखंतु एठी एक्सपेंडिचर रो शेयर दे दिछि केते अछि ना 16:12:9. इनकम टोटल दे दिछि केते आपनकर ना 1530. ये सेविंग करूची 25%. 25% मींस 1/4. 4 टाला यदि इनकम 1 टाला सेविंग तो एक्सपेंडिचर आपनकर केते हला ना 3 हला.
एठी 3 टा जे केते 20% सॉरी एटा अछि 20% माने एटा 5 हे ठीक अछि एटा 5 हे गेले एटा एक्सपेंडिचर हो 4 टा जे मोर कहा से समान 16 अछि यदि 4 टा 16 है इनकम मोर केते अछि 5 तो 5 टा यदि 4 हला आपनकर 16 तो 1 हला 4 5 टा जे केते हला 20 सेमली बी सेविंग करूची केते ना 25% 25% मींस 1/4 4 टा इनकम 1 टा सेविंग डिफरेंस हला 3 3 टा जे मोर हला 12 1 टा जे हला मोर 4 देन 4 इनकम टा जे केते हला 16 तो एटा इनकम हला केते ना 16 एटा ए इनकम एटा बी रे सी रे इनकम सेमती केते ना 25 40% मींस आपन को लिखि परिवे 2/5 एटा ला इनकम एटा ला सेविंग तो एटा ला एक्सपेंडिचर हला 3 3 टा जे मोर का से तो 9 से तो सम 3 टा जदी मोर हला 9 1 टा हला 3 ये 5 टा केता हो ना 15 तो 20 16 15 ये तीन टा कोन हला ना इनकम एई रेशियो रे ही टंका टा डिस्ट्रीब्यूट होई ओ रेशियो रे 20 आउ 16 आउ 15 ये तीन जणा इनकम रा रेशियो 20 10 30 10 40 6 5 11 51 51 is equal to एटा केता हला मोर 1530 1 is equal to केता हला बाबू मोर 30 1 टा जदी मोर 30 हला से 50 बी रो इनकम टा केता हो ना 400 बी इनकम आपन कर आसला केते ना 400 आउट क्वेश्चन सॉल्व करेगा the last question the ratio of last year income of ABC the ratio of last year income of ABC is 3:4:5 while the ratio of their last year income to current year income while the ratio of their last year income to current year income while the ratio of their last year income to current year income 4:5 2:3 and 3:4 if their total current year income is if their total current year income is 98,500 rupees find the present income of B find the current year find the present income of B this is the question the ratio of last year income of ABC is 3:4:5 while the ratio of their last year income to current year income is 4:5 2:3 and 3:4 if their total income total current year income is 98,500 rupees find the present income of B अच्छा ABC रो रेशियो हला A B और C रो रेशियो हला अपन करो 3:4:5 3 4 और 5 ये रेशियो केते हला ना 2:3 ये रेशियो केते हला ना हमरो नहीं ये रेशियो हला 4:5
एटा कोन हला ना 2:3 एटा कोन हला ना 3:4 तो 4 टा इज इक्वल टू केते हला ना 3 1 टा केते हला ना 3/4 5 टा केते हला ना 15/4 धीरज कुमार क्या पढ़ा रहे हैं ये आरबीआई असिस्टेंट का मेन लेवल क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हो ठीक है देखिए 4 इज इक्वल टू 3 1 इज इक्वल टू 3/4 5 इज इक्वल टू 15/4 5 is equal to 3 4 is equal to 3 this 4 is equal to 3 then 1 is equal to 3/4 then 5 is equal to 15/4 15/4 it is the current year income of a hoya 3 is the last year income clear the next number 2 is to 3 2 is equal to 4 then 1 is equal to 2 is equal to 4 then 1 is equal to 2 is equal to 4 1 is equal to 2 then 3 is equal to 6 then 3 is equal to 5 1 is equal to 5/3 then 4 is equal to 20/3 this is the ratio of current year income of ABC 4 3 LCM 12 then it is 45 it is 72 then in each case we multiplied here 12 12 12 okay then 3 4 this is your 80 if you added this number 80 plus 70 150 plus 40 190 190 5 to 7 197 is equal to 98,500 1 is equal to I think 500 5 7 ja 35 5 3 carry 5 9 ja 45 3 48 85 carry 4 carry then 5 1 ja 5 4 9 500 then B share is 72 then 72 into 500 is equal to 36,000 this is your 36,000 it is the बीज share अरे ठीक है जी आज क्लास हम एट रखिवा नेक्स्ट क्लास को आसिला आउ किछि चैप्टर आउ किछि ट्रिक्स नै केना हम सॉल्व करू ओके थैंक यू वेरी मच बाय